Assalamu alaikum dear first year students. Welcome to Dr. Roomi Lectures. Many congratulations and warm welcome on getting admission in your program of study. आपका FSC या A लेवल के बाद MBBS में एडमिशन हुआ है and this is a big change in your life as you have just started your professional studies. FSC और MBBS एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं बिकॉज FSC में आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स था जो आपने स्टडी करनी होती थी. समटाइम्स तो कुछ ऐसे MCQs आते थे जो कि बुक्स की लाइंस होती थी, लेकिन MBBS में you need to have better grip on the concepts. But here in MBBS, your concepts, understanding and application of knowledge will be assessed. Moreover, you have to learn skills and professional attitudes. Hence, it necessitates to better plan and organize yourself. Keeping in mind the issues that first year students may face, I have brought some tips and tricks to get through successfully, irrespective of your program of study, whether you are from MBBS, BDS, D Pharmacy, DPT, Nursing, MLT, or student from any other allied health science. These tips will be very useful for you for whole the program of your study from first year till final year. I am Dr. Mudassar Roomi, currently serving as Assistant Professor Physiology at Allama Iqbal Medical College, Lahore. I was the most distinguished graduate of my MBBS class with 7 gold and 3 silver medals. I got the first position in first, fourth, and final professional exams of MBBS with gold medals in the subjects of community medicine and medicine. My silver medals were in the subjects of physiology, ENT, and gynae ops. Moreover, I was the best graduate of my M.Phil physiology class at University of Health Sciences Lahore. I'm very confident you will like my way of teaching and dedication to my profession. My very first advice to you is, as there are so many books and so much to learn, so Ratta as a predominant strategy will not work. Your knowledge will be better consolidated if you memorize after making concepts. You need to be aware of the course outlines, table of specification, and the assessment criteria for each subject. आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ना है, उसका इम्तिहान कैसे होगा और हर सब्जेक्ट की यूनिट वाइज वेटेज क्या होगी. You must have a collection of past papers of last 10 years for each subject, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. Very recently, University of Health Sciences has launched modular integrated curriculum in which the course content and its assessment have been slightly changed. I'm planning to record a separate video on this integrated curriculum. I hope you will get it very soon. Sometimes students inquire us about the books which they should study. As you know, university recommends several textbooks for each subject. मेरा जवाब स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि बेटा उस बुक का इंतखाब करें कि जो आपका कोर्स कवर करे प्लस उसकी आपको समझ भी आए. For the subject of physiology, you can choose one standard textbook and a review book. Don't choose and study multiple textbooks at the same time because it will be difficult to manage along with other subjects. Medical Physiology by Guyton and Hall is a standard recommended textbook and BRS is a good review book. Use sticky notes whenever required. मसलन उन टॉपिक्स के लिए जो इन बुक्स के अंदर नहीं हैं, अगर कोई टॉपिक जेपी फिजियोलॉजी में है या मुश्ताक फिजियोलॉजी में है तो वहाँ से उसके नोट्स बना के इन बुक्स पर उतार लें. प्लीज़ डोंट फॉरगेट, कॉन्सेप्ट्स मेड यूजिंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स विल स्टे विद यू फॉर लाइफ टाइम. जब हम MBBS के स्टूडेंट्स होते थे तो उस वक्त यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन आजकल बहुत से यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं. स्टूडेंट्स एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए इन चैनल्स को देखते हैं. आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल Dr. Roomi Lectures, which I hope you will find very useful to study the topics of physiology. I try my best to present the difficult concepts in simplified, interesting, and easy to understand manner. Another advice for you is don't listen your seniors too much. मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे दोस्ती ना करें. They can be a very good source of support for you in tough times. Respect them.
लेकिन वो सीनियर्स जो आपको ये कहें कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पास तो आप हो ही जाओगे, आप आखिरी 2 महीने में पढ़कर सब कर जाओगे, चिल करो, फिर दोस्त वगैरह और इस तरह की और छोटी किताबों से एग्ज़ाम पास हो जाएगा, ऐसे में आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सुनो सबकी लेकिन करो मन की। इट इज़ बेटर टू लिसन टू द एडवाइस ऑफ योर एक्सपीरियंस टीचर्स। It will be wise to study smart, not hard. So explore and use such study strategies. For example, SQ3R strategy will help you read and better retain the content of textbook. You will find my videos on such study strategies in near future. I recommend you to adopt a healthy lifestyle. Don't skip your breakfast. This advice is especially important for girls. Your brain needs more glucose when you are in classes. Exercise daily. It will energize you, decrease your stress level, improve your mental health, and it will help you get a better sleep. You need 7 to 8 hours of restful sleep. वो स्टूडेंट्स जो बिला वजह रात को देर तक जागते रहते हैं, मसलन फेसबुक देखते रहे, उनका नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है एंड दे आर मोर लाइकली टू बी लेट कमर्स और स्किप द क्लासेस। हैव अ बैलेंस बिटवीन स्टडी एंड योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सिर्फ पढ़ कर आप बोर हो जाओगे और बर्न आउट भी हो सकता है, इसलिए खेलकूद और तफरीह भी ज़रूरी है। MBBS is a long journey. It's not like a 100-meter race. It's more like a marathon race. You need consistency, which is more important than intelligence. You need to take responsibility for your studies. Be proactive and take initiatives to be regular and punctual to your classes. 75% attendance is a must to appear in examination. Prioritize your activities and make your own schedules. Come prepared for classes. Listen attentively and make your own notes. It is better to sit in front rows of the class. And mind it, you are competing with yourself. Be a better version of yourself on a regular basis. मैंने कुछ स्टूडेंट्स की एक आदत नोट की है कि जब एक सब्जेक्ट मसलन एनाटॉमी का टेस्ट नज़दीक आता है तो दूसरे सब्जेक्ट्स मसलन फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री चंद दिन पहले क्लासेस स्किप करना शुरू कर देते हैं। क्लासेस स्किप करने से उन टॉपिक्स का तसलसल टूट जाता है जो कि आपको पढ़ाए जा रहे होते हैं और ये बाद में मेकअप करना मुश्किल हो सकता है। I will suggest you to appear in all the class tests with full preparation. आपका टारगेट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि टेस्ट को पास करना है। Rather, you need to have higher goals of obtaining knowledge, skills and attitudes which are required to become a competent professional. क्योंकि MBBS का वर्कलोड और इसमें स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, लिहाजा मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि उन्होंने ऐसी कुछ सॉफ्ट स्किल्स सीखनी है जिससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। फॉर एग्जाम्पल, दे नीड टू लर्न how to manage their time effectively and also stress management skills. With these skills, they will become more productive and more effective in their professional studies. I hope these do's and don'ts will guide you to better cope with this change in your life. By following these tips, you can be a more productive and an efficient student. Now, in the end, I would like to request you to subscribe to this channel. प्लीज़ गो टू द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि आपका एडमिशन कौन से कॉलेज और कौन से प्रोग्राम में हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे इन टच फॉर सो मैनी अपकमिंग वीडियोज़।